Hello viewers, the question is Part A. Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. Part B. Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? So in the first part we have to explain the statement, meaning of the statement electric charge of a body is quantized. Now if there is a transfer of a charge from one object to another, it is in terms of the charge carriers, for example electron, and the charge of the electron is fixed. For example, the charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, and the electron transfer take place in terms of integers, for example 1 electron, 2 electron, and so on. It is never the statement that 1.5 electron transfer takes place. It is always in terms of integer transfer. So that's why the charge is quantized. Electric charge of a body is quantized because the body is having a certain number of electrons, and if there are certain number of electrons, then and each electron is having a certain charge, then due to the integer number of presence of electron, we can say that the charge is quantized. So this is the explanation of the first part of this problem. The B part: why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? So when there is a bulk charge transfer taking place, in that case, the minute amount of the electron charge, which is just 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, is very less as compared to the bulk amount of charge. So that's why we assume that the charge transfer is taking place in terms of a continuous manner, not in the quantized manner, because the charge of a single electron is very less as compared to the overall large scale charge or the macroscopic charge. That's why we ignore the quantization of electric charge when dealing with macroscopic और large scale charges. तो यहाँ पे पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें इस स्टेटमेंट के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का क्वांटाइज होता है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें तो एक सर्टेन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहें इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में है या प्रोटॉन है, तो उनका चार्ज फिक्स अमाउंट का होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. और किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में कभी नहीं होते हैं. और कभी भी ट्रांसफ़र जो होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी इन चार्ज कैरियर्स का, तो वो भी इंटीजर फॉर्म में होता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड नेचर का है. बी पार्ट के एक्सप्लेनेशन में हमसे कहा गया है कि हम क्यों इग्नोर कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटाइज्ड नेचर को जब हम मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल चार्जेस को कंसीडर करते हैं. तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल के टर्म्स में हम बात करें तो ओवरऑल चार्ज इतना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन कि उस पर्टिकुलर क्वांटाइज नेचर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, इसको अगर हम कंपेयर करें फॉर एग्जांपल 5 कूलम चार्ज से, तो फॉर एग्जांपल तब उस केस में 5 कूलम के रिस्पेक्ट में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज काफ़ी नेग्लिजिबल है. तो अगर ये ट्रांसफर टेक प्लेस करता है, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उस केस में अगर बल्क में ट्रांसफर होता है तो उस केस में हम 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम जो क्वांटाइज वैल्यू है ये, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्वांटाइज नेचर ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब कभी भी हम बल्क ट्रांसफर की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल ट्रांसफर की बात करते हैं. सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.